خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام عزیزوں. ہم آپ کو آج کے اس گاڈ از لو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے یہ ہمیں خوبصورت دن دیا ہے جس میں ہم اس کو جلال دے سکیں, اس کی پرستش کر سکیں, اور یہی ہمارے لیے ایک سب سے بڑا شرف ہے. یہ ہمارے لیے ایک سب سے بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم خدا کے سچے پرستار کہلائے جائیں. نہ صرف کہلائے جائیں بلکہ ہوں بھی. ہاللیلویا. تو آج کا یہ پروگرام بہت ہی اسپیشل اور زبردست ہوگا کیونکہ میری مسز الیانہ برکت بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری بیٹی حداثہ برکت. اور ویلکم حداثہ ٹو گاڈ از لو. Are you happy today? Praise the Lord. Hallelujah. اور ایک اور جو زبردست بات ہے وہ یہ کہ میری بھانجی, میری سسٹر کی چھوٹی بیٹی جیسکا ابراہیم بھی ہمارے ساتھ ہے, اور جیسکا کی آج ہم زبردست گواہی بھی سنیں گے, اور اور پھر آخر میں جیسکا ہمارے ساتھ ایک شارٹ سا میسیج بھی شیئر کریں گے. سو ویلکم جیسکا ٹو گاڈ از لو. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاسٹر معظم مراد جو کہ ہمارے ورشپ لیڈر ہیں, اور جو ہمارا ڈبنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی یہ لیڈ کرتے ہیں. سو ونس اگین ویلکم معظم ٹو گاڈ از لو. اور ہماری دائیں جانب تشریف فرما ہے پاسٹر ساجد تنویر جو کہ ہماری ورشپ ٹیم کو یہاں لیڈ کرتے ہیں, اور پھر مینجمنٹ میں بھی بہت زیادہ یہ انوالو ہیں. سو ویلکم ونس اگین ٹو گاڈ از لو. تو آئیں عزیزو ہم ایک دعا کریں, اور میں درخواست کروں گا پاسٹر ساجد سے کہ دعا میں ہمیں لیڈ کریں. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آئیے ہم ہاللیلویا. بزرگ آسمانی باپ یسوع کے پاک اور پیارے نام میں ہم مل کر تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے خداوند خدا, اس موقع کے لیے, اس گھڑی کے لیے جس میں ہم خداوند خدا تیرے حضور میں حاضر ہیں. میں خداوند بالخصوص خداوند اس پروگرام کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں گاڈ از لو کے لیے. خداوند آج کے سارے اس ماحول کو خداوند ہم ابھی سے تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں. جب خداوند بات چیت کی جائے خداوند خدا تیری خداوند خدا ہم یہاں پہ خداوند گفتگو کریں خداوند, جب یہ خداوند کلام کی باتیں شیئر کی جائیں تو آج کا یہ پروگرام خداوند لوگوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے یسوع کے نام میں. نوجوان بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, ہاں خداوند سب جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھیں وہ ضرور اس پروگرام سے خداوند برکت پائیں, خداوند تقویت پائیں خداوند, اور خداوند تجھ میں گرو کریں یسوع کے قادر نام. ہم تیری حضوری کو, تیرے مسا کو خداوند اسٹوڈیوز میں مانگتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں. خداوند خدا ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں, ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں تاکہ آج خداوند خدا یہ پروگرام بہت ساری زندگیوں کے لیے خداوند برکت کا باعث ٹھہرے, زندگیوں کی تبدیلی کا باعث بن جائے یسوع کے قادر نام میں, اور سارا جلال تیرے پاک نام کو ملے. ایک بار پھر ہم تجھے خداوند خدا خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, اور یہ دعا مانگتے ہیں ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے. آمین آمین آمین. پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ. تھینک یو سو مچ پاسٹر ساجد. اور آج عزیزو جیسے کہ میں نے پہلے شیئر کیا کہ جیسکا ہمارے ساتھ اپنی ایک بڑی ہی پاورفل ٹیسٹمونی شیئر کریں گی. بیسکلی انہوں نے ابھی ریسنٹلی ہی بلکہ لاسٹ نائٹ انہوں نے ہماری جو جمعرات کی شفائی بشارتی عبادت ہے اس میں اپنی گواہی کو شیئر کیا. بیسیکلی ہم اسی گواہی کو انسرٹ کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں چند ایک سوالات جو جیسکا سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو جیسکا آپ خوش ہیں کہ آپ پاکستان میں ہیں؟ Yes, I'm glad to be here. جی ہاں, مجھے یہاں پر آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. تو جیسکا آپ کے پیرنٹس خدا کی خدمت میں انوالو ہیں. سو آپ کیسا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس خدا کے خادم ہیں اور ساری دنیا میں وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں؟ I'm glad to know that my parents are in ministry. مجھے اس بات سے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میرے والدین خدا کی خدمت کرتے ہیں. اور عزیزوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گو کہ یہ میری بھانجی ہیں, میری ایک سسٹر ایسٹر,
ان کی جو چھوٹی بیٹی ہیں، لیکن ان کے جو والد صاحب ہیں پاسٹر مائیکل مسیح، جن کا پروگرام آپ برکت ٹی وی پر دیکھتے ہیں، گاڈ آنسرز پریئرز، تو وہ ان کے والد صاحب ہیں، اور خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے بڑی قدرت کے ساتھ، بڑی کثرت سے ساری دنیا میں استعمال کر رہا ہے. اور یہ جیسیکا، مجھے جان کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ خدا کے خادم اور خادمہ کی بیٹی ہیں. پریز دی لارڈ. تو پہلی دفعہ کب آپ نے محسوس کیا کہ آپ کو نجات کی ضرورت ہے اور آپ کو یسوع کو دل دینے کی ضرورت ہے؟ The first time, even though I learned about God when I was younger, گو کہ بہت چھوٹی عمر سے مجھے خدا سے متعلق بتایا گیا تھا. the first time I realized that I needed to have Jesus Christ as my Savior لیکن پہلی مرتبہ مجھے اس بات کا احساس تب ہوا کہ مجھے یسوع مسیح کی ضرورت ہے جب was after middle school and before high school. مڈل اسکول اور ہائی اسکول کے درمیان کا جو عرصہ ہے، اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے نجات حاصل کرنا چاہیے. بڑی ہی زبردست بات اور ایک بڑی پاورفل سچائی کہ ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے سے ہم مسیحی نہیں بن جاتے، بلکہ مسیحی ہم اس وقت بنتے ہیں جب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں کہ مجھے ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے. میں ایک گنہگار ہوں اور مجھے ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے. اور یہی چیز جیسیکا نے شیئر کیا کہ جب یہ مڈل اسکول اور ہائی اسکول کے درمیان میں تھی، probably around 8th grade، 8ویں جماعت میں، اور اس وقت you were probably 13 or 14، 14 سال کی عمر میں جیسیکا نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ میں گنہگار ہوں اور مجھے نجات دہندہ کی ضرورت ہے. تو so at that time، اس وقت آپ نے پھر یسوع کو اپنا دیا. Yes. تو آپ بھی، خاص کر جو نوجوان ہیں یا آپ عمر کے کسی بھی حصہ میں کیوں نہ ہوں، آپ اگر خدا سے دور ہیں اور آپ کو اطمینان چاہیے اور تسلی چاہیے، سکون چاہیے، اور اپنی آخرت کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اطمینان ملے اور میں پوری طرح سے اپنے دل میں اطمینان رکھوں کہ میری آخرت کیا سیکیور ہے یا نہیں، اگر آپ اس کے تعلق سے شک میں ہیں تو آپ کو آج یسوع کو اپنا دل دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم یسوع کو اپنا دل دیتے ہیں تو پھر خدا کا کلام، خدا کے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے خدا اپنے کلام میں، بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا ہم سے وعدہ کرتا ہے اور خدا ہمیں وہ اطمینان دیتا ہے. اور اسی لیے پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 17، 18، 19 آیت میں لکھا ہے کہ محبت کامل ہو گئی ہے اور کامل محبت میں کوئی خوف نہیں ہے. ہلیلویا. پھر کوئی شک نہیں وہاں رہتا کہ عدالت کے دن میرا کیا بنے گا، کیونکہ یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیا اور وہ صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. اور وہ جو شفا ہے وہ کامل شفا کے لیے لفظ وہاں یوز کیا گیا ہے. ہلیلویا. تو آج آپ نجات پا سکتے ہیں. آج آپ اپنے اندر ایک اطمینان اور تسلی رکھ سکتے ہیں کہ میری آخرت ہمیشہ کے لیے سیکیور ہو چکی ہے اور میں اپنے اندر پورا اطمینان رکھتا ہوں. اور یہ اطمینان اسی وقت آئے گا جب آپ یسوع کے سپرد اپنی زندگی کریں گے، اسی طرح سے جیسے جیسیکا نے کی. پریز دی لارڈ. تو عزیزو، نیکسٹ سیشن میں ہم جیسیکا سے وہ گواہی سنیں گے. وہ بہت ہی پاورفل، اس کی ایک لائف ٹیسٹمونی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اس سے بہت سے نوجوان
सीखेंगे और बल्कि अगर आप यंग हैं या मिडिल एज हैं या यूथ में हैं, जिस एज में भी इस वक्त आप हैं आपको इस गवाही से ज़रूर बरकत मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इससे पहले कि हम दूसरे सेशन को शुरू करें और जेसिका से वो गवाही सुने, मैं चाहता हूँ कि हदासा भी हमारे साथ शेयर करें। हदासा, आप खुश हैं कि आप पाकिस्तान में हैं और बरकत टीवी का जो नया स्टूडियोज़ है आप इसमें हैं? Yeah. Are you happy? I'm happy. Praise the Lord. So what grade are you in? I'm in 6th grade. आप अपने स्कूल में आपको अपने स्कूल को एंजॉय करती हैं? Yes, very much. आपको स्कूल जाना पसंद है? Kind of. हाँ जी, दासा कह रही है कि मुझे पसंद है लेकिन बस ठीक ही है। तो इस एज के बच्चे अमूमन ऐसा ही करते हैं, इसलिए हमें सब वालिदैन को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है बच्चों को। तो वैसे भी हदासा, आपका इन दिनों में जो ग्रेड एवरेज है, आपका जीपीए कैसा है? It's good. अच्छा है, गुड जॉब, गुड जॉब। तो एक और जो एक ज़बरदस्त बात हदासा के ताल्लुक से है, तो आपका एक ग्रुप है। Yes. तो ग्रुप का नाम क्या है? Princess of God. खुदा की शहज़ादियाँ। और इस ग्रुप में कौन कौन है? Me, my cousins Olivia, Shekinah, and Zimra. बता रही हैं कि ग्रुप में मैं हूँ, उनकी कज़न ओलिविया, शिकायना And Olivia. Zimra. ज़िम्रा और ज़िमरा हैं। ज़िम्रा जो दासा की 3 कज़न्स हैं, चौथी हदासा है और इनका एक ग्रुप है जिनको ये कहती हैं कि ये प्रिंसेसेस ऑफ गॉड हैं, खुदा की शहज़ादियाँ हैं और ये बड़ा अच्छा गीत गाती हैं। So which song you wanna sing today? Actually, you guys have already recorded, so what is that song? Goodness of God. खुदा की भलाई। Praise the Lord, praise the Lord। तो एलियाना, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं हदासा से पूछना चाहती हूँ कि जब ये स्कूल में होती है तो आप प्रेयर करती हो अपनी फ्रेंड्स के लिए, आप और एल्सा? Yes. आप उसके बारे में शेयर करोगी? बताओ। Whenever we pray for our friends, then they are always happy after we do it, and So you actually pray for your friends in your class, you and Elsa. Yeah. एल्सा दासा की एक और कज़न है, ये दोनों एक ही क्लास में हैं और जो ये अपनी क्लासेस में जो दोस्त बनाती हैं तो उनके लिए ये कह रही हैं कि हम दुआ करती हैं और दुआ के बाद what is their reaction? उनका क्या रिएक्शन होता है? sometimes they cry. They cry when you guys pray for them. Wow, that's awesome. Hallelujah. तो आप मौजूद बताएं। बता रही हैं कि जब वो जो उनकी साथी तालिबात हैं उनके लिए दुआ करती हैं तो उनका रद्द अमल अमूमन ये होता है कि वो रोना शुरू कर देती हैं। Praise the Lord, praise the Lord. और And they're always happy, and they're always telling us how they feel, and they always want us to pray for them more every day. They want to do what? They always want us to pray for them more every day. Oh, they want you guys to pray for them more every day. Wow. और वो बता रही हैं कि रद्द अमल में वो खुशी का इजहार भी करती हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि ये रोज़ उनके लिए दुआ करें। Praise God. That's awesome. So, आप अभी हमें वो गीत सुनाएंगी और ये गीत आप चारों ने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आए जीजो इस गीत को सुनें। नहीं ये For your mercy.
I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fires in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. God is love, our God is love. God is love, our God is love. God is love. God is love, our God is love. God is love, our God is love. वेलकम बैक जीजो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने खूबसूरत गीत सुना हदासा और इसकी 3 कज़न से, और इनके ग्रुप का नाम, इनके बैंड का नाम है द प्रिंसेसेस ऑफ गॉड, खुदा की शहजादियाँ। सो यू गाइज डिड वेल, थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। और फिर मुझे इस बात का इल्म था कि हदासा अपनी दोस्तों के साथ, सहेलियों के लिए स्कूल में दुआ करती हैं, अब लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब ये दुआ करती हैं तो खुदा का रूह उन बच्चियों को छूता है और वो रोती हैं दुआ के दौरान। प्रेज द लॉर्ड। कई दफ़ा जब ये दोनों प्रेयर करती हैं तो घर में आके भी ऑनलाइन भी उनके साथ होती हैं, ऑनलाइन भी दुआ और कई दफ़ा एक लड़की थी वो एक दफ़ा तो उसने इनके साथ प्रेयर की, लेकिन उसके बाद ना वो नहीं आना चाहती थी प्रेयर में। तो ये दोनों फिर परेशान हो कि उसको प्रेयर की ज़रूरत है लेकिन वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करना चाह रही। फिर मैंने इन दोनों को समझाया कि आप उसके लिए ख़ुद प्रे करो, तो फिर खुदावंद का रूह जो है वो ख़ुद उसको टच करेगा जब, तो वो खुदावंद के पास आएगी।
Praise تو the یہ Lord. پھر دونوں مل کر شفایت بھی ان کی اس کے لیے کرتی تھی. زبردست دعا زبردست. کرتی تھی. Praise the Lord. تو آئیں عزیزو اب ہم جیسیکا سے گواہی سنیں گے اور یہ گواہی ہم نے جمعرات کی شفائیہ اور بشارتی عبادت میں ہم نے ریکارڈ کی تھی اور خداوند نے جیسیکا کو چھوا انوائنٹ کیا اور بہت ہی زبردست طریقے سے جیسیکا نے یہ گواہی شیئر کی اور پاسٹر معظم نے ان کا ترجمہ کیا. تو آئیں عزیزو اس گواہی کو سنیں. Hello, everyone. آپ سب کو سلام. Thank you for taking the opportunity to listen to my testimony. میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ اس وقت جہاں پر موجود ہیں اور میں آپ کے ساتھ اپنی گواہی جو ہے وہ شیئر کر سکتی ہوں. After high school, I was accepted into one of the top engineering universities in America. بہن بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے اپنا ہائی اسکول ختم کیا تو امریکہ کی ایک بہت نامور انجینئرنگ یونیورسٹی میں ان کو داخلہ ملا. I finished my Bachelor of Science in Mechanical Engineering in 2019. انہوں نے 2019 میں سائنس اور انجینئرنگ میں اپنا بیچلرز کمپلیٹ کیا, مکمل کیا تھا. I decided to take one more year to do my master's degree. اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 1 سال اور پڑھیں گی اور اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کریں گی. I wanted to increase my skill level and experience. وہ اپنا تجربہ اور اپنا جو مہارت ہے اس کو بڑھانا چاہتی تھیں. My focus was in biomechanical engineering and I really enjoyed that topic. اور یہ بایو میکینیکل انجینئرنگ کا جو شعبہ ہے اس میں ان کی دلچسپی تھی اور یہ اس میں آگے بڑھنا چاہتی تھیں. Then in August 2020, I graduated with my master's degree. اور پھر 2020 میں اگست کے ماہ میں انہوں نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری بھی مکمل کی. After that, I decided to take a break for the rest of the year. اور پھر اس کے بعد انہوں نے 1 سال بریک لینے کا سوچا. In 2021, I started to apply for jobs. 2021 میں انہوں نے مختلف جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کیا. But I kept getting rejected over and over again. لیکن ان کو بار بار انکار سننا پڑتا تھا, ان کو کسی جگہ پر نوکری نہیں مل رہی تھی. Having a master's degree wasn't enough. The companies wanted a PhD. ماسٹرز ڈگری جو تھی وہ ناکافی تھی. کمپنیز یہ چاہتی تھیں کہ ان کے پاس پی ایچ ڈی ہو تب انہیں نوکری مل سکتی تھی. The companies said, "Thank you for your interest in this position. کمپنیز یہ کہتی تھی کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری کمپنی میں دلچسپی رکھتی ہیں. But after careful review and consideration, لیکن غور سے آپ کا جو سی وی ہے وہ پڑھنے کے بعد we have decided to pursue other candidates at this ہم نے یہ time." فیصلہ کیا ہے کہ ہم دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پاس نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے ان کو موقع دیں گے. Every time I got an email like that, it felt like a cut to my heart. جب بھی مجھے کوئی ایسی ای میل موصول ہوتی تو میرا دل جو تھا وہ چھت جاتا تھا. The constant rejection was hard to deal with. یہ مسلسل کی جو مجھے ٹھکرایا جانا تھا یہ مجھے تکلیف دے رہا تھا. I wondered, what else do I have to do? میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے. Am I not good enough? کیا مجھ میں کوئی مہارت نہیں ہے؟ کیا میں اس کے قابل نہیں ہوں؟ Are other people better than me? کیا دوسرے لوگ مجھ سے بہتر ہیں؟ Does God even care about me? کیا خدا کو میری پرواہ ہے بھی کہ نہیں؟ Why was I even born? میں پیدا ہی کیوں ہوئی؟ I started to doubt God میں نے خدا پر شک کرنا شروع کر دیا and thought that He cares for everyone else. اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید وہ باقی تمام لوگوں کی پرواہ کرتا ہے. And why wasn't I receiving anything اور مجھے کیوں نہیں کوئی اچھا جواب مل رہا when the people who didn't love God were receiving everything? جبکہ وہ لوگ جو شاید خدا سے محبت نہیں کرتے ان کے لیے اچھے کام ہو رہے ہیں, ان کو نوکریاں مل رہی ہیں. That was a very low point in my life. وہ میری زندگی کا بڑا ہی عجیب وقت تھا. But I'm extremely thankful for my parents. لیکن میں اپنے والدین کے لیے خدا کی بے حد شکر گزار ہوں. They prayed for me and encouraged me, انہوں نے میرے لیے دعا کی اور میری حوصلہ افزائی کی. especially my mom. خاص طور پر میری والدہ.
She prayed for me and encouraged me to memorize verses. उन्होंने मेरे लिए दुआ की और मेरी हौसला अफजाई की कि मैं बाइबल की आयत याद करूं And to read Christian books. और मसीही कुतब का मुतालिया करूं। I didn't feel like doing anything. मेरा कुछ भी करने में मन नहीं लगता था। I had self-pity and negative thoughts. मैं अपने ऊपर तरस खाती रहती थी और मेरे जहन में ख्यालात मनफी ख्यालात रहते थे About myself, my life, and my future. मैं अपने ताल्लुक से, अपनी जिंदगी से मुतल्लिक और अपने मुस्तकबिल से मुतल्लिक मनफी ख्यालात सोचती थी। I kept complaining and saying wrong things about myself. मैं हर वक्त शिकायत करती रहती थी और अपने से मुतल्लिक गलत बातें बोलती रहती थी। In order to distract myself from the pain, और अपने ध्यान को उस तकलीफ से जिसमें से मैं गुजर रही थी हटाने की खातिर I focused on my phone, movies, shows, and sleeping. मैं फोन पर ध्यान देती थी, फिल्में देखती थी या सोने में वक्त गुजारती थी। When I look back now, लेकिन अब जब मैं उन दिनों को याद करती हूँ I realize that people try everything else, तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि लोग सब कुछ करना चाहते हैं before they turn to God for help. इससे पहले कि वो खुदा की तरफ रुजू करें मदद के लिए। But it's important to remember लेकिन ये बात याद रखना बेहद जरूरी है that whenever you're facing a difficult situation, कि जब कभी आपको मुश्किल हालात का सामना करना पड़े turn to God first. पहले खुदा से रुजू कीजिए। In March 2021, मार्च 2021 में I was very desperate. मैं बहुत बेचैन थी। I knew that what I was currently doing मैं ये जानती थी कि जो मैं कर रही हूँ फिल वक्त isn't going to do anything for my life. क्या वो मेरी जिंदगी के लिए कुछ बेहतर साबित करेगा, कुछ बेहतर हो सकता है। I started praying more and asking for God's help. मैंने ज्यादा दुआ करना शुरू कर दिया और खुदा से मदद तलब की। My mom told me about several books, and I decided to read one of those Christian books. मेरी वालिदा ने मुझे बहुत सी किताबों से मुतल्लिक बताया और मैंने उनमें से एक किताब को पढ़ना शुरू किया। I read a book by Charles Capps मैंने किताब पढ़ी जो चार्ल्स कैप्स ने लिखी थी called The Tongue. जिसका उन्वान था, उसका जो किताब का नाम था वो था ज़बान, A Creative Force. जो एक तख्लीक की कुव्वत रखती है। It helped me to realize the power of words, उससे मुझे ये एहसास हुआ कि जो अल्फाज हैं उनमें किस कदर ताकत होती है and that we need to change the words that we speak. और जो अल्फाज हम बोलते हैं हमें उन पर ध्यान देना चाहिए या उन्हें बदल लेना चाहिए। I also listened to a sermon about confessing God's word. और मैंने एक पैगाम भी सुना जो खुदा के कलाम को बोलने से मुतल्लिक था, जो कलाम की बातें हैं उनका इतराफ करना था। As I was reading that book and listening to the sermon, my mind began to change. जब मैंने वो पैगाम सुना और उस किताब को पढ़ा तो मेरी सोचों में एक तब्दीली आना शुरू हो गई। One day when I was praying, God gave me a revelation. जब मैं दुआ कर रही थी एक दिन तो खुदा ने एक मुकाशिफा मुझे अता किया। He said to me, उसने मुझसे कहा, "Why are you seeking the things in people तू क्यों लोगों में तलाश कर रही है कुछ ना कुछ, who don't even love you, जिन्हें तुझसे मोहब्बत भी नहीं, who don't even care for you, जिन्हें तेरी कोई परवाह नहीं, and who don't even know who you are? जो ये भी नहीं जानते कि तू कौन है। Come seek me, तू मेरी तरफ रुजू कर, मेरी तालिब हो, the one who loves you so much जो तुझसे बेहद मोहब्बत करता है, and knows about you. जो तेरे बारे में सब कुछ जानता है। The things and people you seek जो बातें तू उन लोगों में तलाश करती है can't do anything for you, वो तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, but I can do everything for you, लेकिन मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ and I can make you successful. और मैं तुझे कामयाबी बख्शूंगा। When I received that revelation, जब मुझे ये मुकाशिफा मिल गया I started to cry. तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। It made me realize how we rejected God.
इस चीज ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि हम कैसे खुदा को रद्द कर देते हैं and we seek after other things to bring us peace and comfort. और हम दूसरी चीजों के पीछे दौड़ते हैं, उनकी तलाश करते हैं कि वो हमें सुकून दें, इत्मीनान दें. And it reminds me of the verse in Matthew 23, और इससे मुझे मत्ती की इंजील के 23वें बाब की एक आयत याद आती है, 37. उसकी 37वीं आयत. O Jerusalem, Jerusalem, ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, the one who kills the prophets तू जो नबियों को कत्ल करता and stones those who are sent to her. और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है. How often I wanted to gather your children together, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं. as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. मगर तुमने ना चाहा. When my mind began to change, जब मेरा जहन, मेरी सोचों में तब्दीली आना शुरू हुई, I wasn't this speaking or thinking negative thoughts anymore. तो मैंने जो मनफी ख्यालात सोचती थी उन्हें सोचना छोड़ दिया. If a negative thought did come, अगर मेरे जहन में कोई मनफी ख्याल आता भी I rebuked it right away तो मैं उसे फौरन झिड़क देती and spoke God's word. और खुदा का कलाम बोलती. I needed constant encouragement and reminder मुझे मुसलसल हौसला अफजाई की जरूरत थी और इस बात की याद दहानी की जरूरत थी that God truly loved me कि खुदा वाकईतन मुझसे प्यार करता है and has wonderful plans for my life. और मेरी खातिर उसके मंसूबे बड़े जबरदस्त हैं, हैरान कुन हैं. I needed to know who God truly was. मुझे इस बात की जरूरत थी कि मैं जानूं कि खुदा दरअसल है कौन. So I began to look in the Bible सो मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया and see verses where it showed about God's character and success. और मैंने उन आयात को पढ़ना शुरू किया जिसमें से खुदा का किरदार मेरे सामने खुल कर आता. Even though it was hard, I needed to have faith and trust in God. गो कि ये मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने खुदा पर भरोसा किया, उस पर ईमान रखा. I had to pray a lot and remember verses from the Bible about God's promises until I believed it. मुझे बहुत ज्यादा दुआ में वक्त गुजारना पड़ा जब तक कि मैं इस काबिल ना होगी कि जो कुछ उन आयात में खुदा से मुतल्लिक लिखा था मैं उस पर यकीन करना शुरू ना हो गई. I created an 11-page document full of Bible verses. और मैंने 11 सफ़हात पर मबनी एक यूं कह लीजिए कि किताबचा बना लिया जिसमें खुदा के किरदार से मुतल्लिक बातें लिखी हुई थी. And I prayed and spoke those verses over my life. और मैं अपनी जिंदगी पर दुआ के वसीले से उन आयात का इतलाक करती थी. I also listened to a lot of encouraging messages और फिर मैंने बहुत से ऐसे पैगामात सुने जो मेरा हौसला बढ़ाते थे, about trusting in God and waiting for His timing. यानी खुदा से मुतल्लिक और जो सही वक्त उसने मेरे लिए चुना है उससे मुतल्लिक मेरा हौसला बढ़े, मैं यकीन कर सकूं उस पे. I did this for the rest of 2021. और फिर मैंने 2021 सारा साल यही किया. God helped me to build my character and personality और इसके वसीले से खुदा ने मेरी शख्सियत और किरदार को बनाया and prepare me for the next thing that I was going to do in my life. और फिर उस अगले काम के लिए मुझे तैयार किया जो मैं अपनी जिंदगी में करने को थी. If God had given me what I wanted when I wanted it, अगर खुदा मुझे उस वक्त वो दे देता जो मैं चाहती थी कि जिस वक्त में मुझे मिले, it would have been very bad तो शायद वो बहुत बुरा होता and I would have become very prideful. और शायद मैं बहुत मगरूर हो जाती. So I believe that God made me ready for what I was about to receive. सो मेरा ये ख्याल है कि खुदा ने मुझे उस चीज के लिए तैयार किया जो वो मुझे देने वाला था. I kept trusting in God and praying. और मैं खुदा पर भरोसा रखती रही और दुआ जारी रखी. I still applied for jobs, मैं तब भी नौकरियों के लिए अप्लाई करती थी, but I still got rejected. लेकिन मुझे मुसलसल रद्द ही किया जा रहा था. But this time it didn't hurt as much. लेकिन अब मुझे उस रद्द किए जाने से उतनी तकलीफ ना होती थी. Because I believe that God keeps His word and has good plans for me. क्योंकि मैं ये जानती थी कि खुदा के मेरे लिए बड़े ही बाकमाल मंसूबे हैं. Whenever I got rejected, जब भी
मुझे इनकार सुनना पड़ता, I thought that God has something better planned for me. तो मेरे जहन में यही ख्याल आता था कि खुदा का मेरे लिए इससे भी बेहतर मंसूबा है. Sometimes we don't get what we want बाज़ औक़ात हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, because God wants to protect us from situations or people. क्योंकि खुदा कई मर्तबा हमें कुछ लोगों से और हालात से बचाना चाहता है, Or we're just not ready to handle the blessings He has या for शायद हम us. उस वक्त उन बरक़ात को संभालने के काबिल नहीं होते जो वो हमें देना चाहता है. In December 2021, 2021 के दिसंबर में I received a message on LinkedIn. मुझे लिंक्डइन पर एक पैगाम मौसूल हुआ. A technical recruiter was interested in my profile. एक जो टेक्निकल शख्स था वो लोगों को जो भर्ती कर रहा था, उसने मेरी प्रोफाइल देखी और उसने उसमें दिलचस्पी का इजहार किया And asked if I wanted to submit my resume. और उसने मुझे ये कहा कि क्या आप अपना सीवी जो है वो हमें जमा करवाएंगी. I said, I'll send my resume and see what happens. तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैं अपना रेज्यूमे भेजती हूँ, सीवी भेजती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है. I sent it one day before the deadline. और जो आखिरी तारीख थी उससे एक दिन पहले मैंने अपना सीवी भेजा. This time I wasn't worried at all. उस वक्त मुझे, जब मैंने ये सीवी भेजा तो मुझे बिल्कुल किसी किस्म का खौफ नहीं था. And I just believed that whatever happens will be the best for me. और मेरा ये ईमान था कि जो भी इसका नतीजा होगा वो मेरे लिए बेहतरीन होगा. They called me the next day उन्होंने अगले दिन मुझे कॉल किया and did a preliminary phone call with me और उस पर उन्होंने मुझसे बातचीत की to see if I was a good choice. और वो ये पता लगाना चाहते थे कि क्या मैं उनके लिए फायदेमंद साबित होंगी या नहीं. I prayed a lot and asked God to grant me favor and compassion. मैंने बहुत दुआ की और खुदा से कहा कि मुझे तू फेवर देना, मुझे उनकी नज़र में मकबूल ठहराना. Just like Nehemiah did when he went to the king. बिल्कुल वैसे ही जैसे नहमिया ने किया था जब वो बादशाह के हुजूर पेश हुआ था. The second day they did a video interview with me. अगले दिन उन्होंने मुझसे वीडियो इंटरव्यू किया. They were impressed by my resume and skills. उनको मेरी महारत जो थी वो उससे वो मुतासिर हुए और उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया And wanted to continue the interview process with और me. वो चाहते थे कि ये जो सिलसिला है ये जारी रहे. The third day तीसरे दिन I had a video interview फिर एक वीडियो इंटरव्यू हुआ with the vice president of the company's division. जो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था उसके साथ. The interview went well जो इंटरव्यू था वो तो बहुत अच्छा रहा and he was glad to speak with me. और उसे खुशी हुई मुझसे बातचीत करके. I had to wait a long time to hear from them again. लेकिन मुझे उनका जवाब सुनने के लिए काफी देर इंतजार करना पड़ा. But during that time I still had faith लेकिन उस सारे वक्त में भी मेरा ईमान मजबूत था and believed that God would give me the best job. और मेरा ये यकीन था कि खुदा मुझे बेहतरीन जॉब देगा. In the middle of January, जनवरी के वस्त में they called me again उन्होंने दोबारा से मुझे कॉल किया and told me I had to do one more interview और ये कहा कि एक और इंटरव्यू मुझे देना होगा with the director. जो डायरेक्टर के साथ होगा. In February, फरवरी में I had the interview with the director डायरेक्टर के साथ मेरा इंटरव्यू था and it went very well. और वो बहुत अच्छा रहा. The interview felt like a natural conversation. और वो इंटरव्यू इस किस्म का था कि जैसे हम अमूमन फितरी तौर पर गुफ्तगू करते हैं आपस में. Then 4 days later, they called me. 4 दिन के बाद उन्होंने फिर मुझे कॉल किया. I missed the call. मुझसे कॉल मिस हो गई Then I called them back immediately. और फिर मैंने फौरन उन्हें वापस कॉल किया. They told me they had good news उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास मेरे लिए खुशखबरी है and they wanted to choose me for this position और वो उस खास पोजीशन के लिए मुझे चुनना चाहते थे. and asked if I wanted the job. और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप ये नौकरी लेंगी. I told them yes. मैंने उनसे कहा कि जी हाँ. The job that I have now जो जॉब अब मेरे पास है is not something I ever imagined. वो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि होगी मेरे पास I wasn't even qualified for it. और मैं उसके लिए क्वालिफाइड भी नहीं थी.
This job is mostly about electrical engineering, ये नौकरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मुतल्लिक है, which was a difficult topic for me in college. जो कि कॉलेज में मेरे लिए एक मुश्किल मजमून था. But I believe that if God wants you somewhere, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर खुदा आपको किसी जगह पर ले जाना चाहता है He will make a way for you, तो वो आपके लिए रास्ता भी बनाएगा. even if you don't meet the requirements अगर or आप qualifications. उनके पूरा नहीं भी उतरते उनके पैराए पर, He'll make the way for you to have that. तो फिर भी वो आपके लिए रास्ता बनाएगा. I trust that God had the best plans for me, मेरा ये ईमान था कि खुदा के पास मेरे लिए बेहतरीन मंसूबे हैं, and I stopped thinking about my own plans. और फिर मैंने अपने मंसूबों से मुतल्लिक सोचना छोड़ दिया. I trusted that I had to believe in God and wait for His timing. सो मेरा ये यकीन था कि मुझे खुदा पर ईमान रखना है और उसके वक्त का इंतजार करना है, Because when that time comes, क्योंकि जब वो वक्त आता है you'll realize that what God has planned for you is so much better than you could have thought. तो फिर आप ये जान जाएंगे, आपको एहसास होगा कि जो मंसूबा उसका आपके लिए था वो आपके अपने मंसूबे से कहीं बेहतर था. Like it says in the Bible, जैसा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, many are the plans in a man's heart, इंसान के दिल में तो बहुत से मंसूबे होते हैं, but it is the Lord's purpose which will prevail. लेकिन जो खुदा का मंसूबा है हमेशा वो ही कामयाब होता है. When I think about the working conditions जब मैं जो काम से मुतल्लिक जो हालात हैं उनसे मुतल्लिक सोचती हूँ and the people I work with, और उन लोगों से मुतल्लिक जो मेरे साथ काम करते हैं, I'm in so much comfort and peace. तो मैं बड़े इत्मीनान में हूँ, मैं बड़े आराम में हूँ. It also says in the Bible, बाइबल में ये भी लिखा है the blessing of the Lord, कि खुदा की बरकत it maketh rich, वो अमीर बनाती है. and He adds no sorrow with it. जो खुदा की बरकत है वो दौलतमंद बनाती है और उसके साथ किसी किस्म का गम शामिल नहीं होता. Because if I was working in the place I wanted to work it before, क्योंकि अगर मैं जहां पर पहले काम करना चाहती थी वहां पर काम कर रही होती I wouldn't have been treated very well. तो शायद मेरे साथ वहां पर अच्छा सलूक या बर्ताव ना किया जाता. I'm learning a lot of new things मुझे बहुत सी नई चीजें सीखने का मौका मिल रहा है and increasing my knowledge and skill and और credibility. उससे मेरी महारत में भी इजाफा हो रहा है, मेरे इल्म में भी इजाफा हो रहा है. I always thought I would work in the biomechanical field, मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं बायोमैकेनिकल का जो शोबा है उसमें काम करूं, but God had different plans. लेकिन for me. खुदा के मंसूबे मुख्तलिफ थे. Now I'm working in a large telecommunications company अब मैं एक बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशंस की कंपनी है उसमें काम कर रही हूँ, called Comcast जिसका नाम है कॉम्पास्ट, as an engineer in planning and design. और वहां पर मैं डिजाइन और जो है मंसूबाबंदी करना वहां पर एज एन इंजीनियर काम कर रही हूँ. My manager and team members जो मेरे मैनेजर्स हैं और टीम मेंबर्स हैं are so kind and supportive. वो बहुत मेहरबान हैं और बहुत मदद करते हैं. They help train me, वो मेरी मदद करते हैं कि मैं सीख सकूं, answer my questions, मेरे सवालात के जवाब देते हैं and encourage me to learn more so I can reach higher engineering positions. और मेरी मदद करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं कि मैं मजीद सीख सकूं और इस शोबे में तरक्की कर सकूं. Now my vision for the future और मेरा रोया मुस्तकबिल से मुतल्लिक ये है is to encourage other people कि दूसरे लोगों की हौसला अफजाई करूं to have faith and trust in God कि खुदा पर ईमान रखें, यकीन रखें for everything that they face. उन तमाम हालात में जिनका उन्हें सामना है. Not just seeking God when they need something, सिर्फ उस वक्त नहीं खुदा के तालिब होना जब किसी चीज की जरूरत हो, but all the time. लेकिन बल्कि हर वक्त आपको खुदा के तालिब रहना चाहिए. As they seek God, और जब वो खुदा के तालिब होंगे God will bless them तो खुदा उन्हें बरकत देगा and make you successful. और कामयाब भी करेगा, Because God has wonderful plans for क्योंकि us. खुदा के हमारे लिए जो मंसूबे हैं वो बड़े बेशकीमत हैं. In the future, I also want to use music to help encourage people. और मुस्तकबिल में मैं मौसीकी का भी सहारा लेना चाहूंगी ताकि लोगों को हौसला बुलंद हो. The times when I was depressed, जिस वक्त में मैं परेशान थी, डिप्रेस्ड थी,
encouraging Christian music जो हौसला अफजा मसीही मौसीकी है, helped me to overcome that. उसने मेरी मदद की कि मैं उस सारी परेशानी और डिप्रेशन पर गालिब आ सकूं. I want the songs and words that I listen to, जो गीत और अल्फाज मैं सुनती थी, I want those to be translated into other languages मैं चाहती हूं कि उनका तर्जुमा दूसरी जबानों में भी किया जाए, so that others can also be encouraged ताकि दूसरे भी उनके वसीले से हौसला पाएं and draw closer to God. और खुदा के करीब हो जाएं. Because music has a very powerful effect on people. क्योंकि मौसीकी का लोगों की जिंदगियों पर बड़ा गहरा असर होता है. In the end, I want to say this. आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ, Seek God, खुदा की तलाश कीजिए the one who loves you very much जो आपसे बेपनाह प्यार करता है and can give you success in all the things you need. और आपको आपकी जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी अता कर सकता है और वो दे सकता है जो आपको चाहिए. Don't just seek God for success or possessions. सिर्फ खुदा के तालिब इसलिए ना हो कि वो आपको जो है वो चीजें अता करे या आपको कामयाबी अता करे. Seek Him to know Him more उसकी इसलिए तलाश कीजिए ताकि आप उसको और ज्यादा गहरे तौर पर जान सकें and have a deeper relationship with और Him. उसके साथ एक गहरे ताल्लुक में कायम हो सकें. As you seek God, जब आप खुदा के तालिब होंगे He will change you from the inside तो वो आपको अंदरूनी तौर पर बातनी तौर पर बदल देगा and prepare you for what He has planned for you और जो उसका मंसूबा है आपके लिए उसके लिए आपको तैयार करेगा and all the blessings you are about to receive. और उन तमाम बरकत के लिए भी जो वो आपको देने को है. Once you start getting closer to God, जब आप खुदा के करीब होना शुरू होंगे you'll start to feel empty without Him. तो फिर आपको उसके बगैर अपने अंदर एक खला महसूस होगा, खालीपन महसूस होगा. And the last thing, और आखिरी बात, once you change your thinking जब आपकी सोच बदल जाएगी या आप इसे बदल लेंगे and the words that you speak, और वो अल्फाज जो आपके मुंह से निकलते हैं बदल जाएंगे and you stop thinking and speaking negative, और आप मनफी सोचें सोचना और मनफी अल्फाज बोलना बंद कर देंगे but you speak positive thoughts in God's word, और उसकी जगह आप मस्बत अल्फाज बोलेंगे और खुदा का कलाम बोलेंगे. once you change your mind, जब आप अपनी सोच को बदल लेंगे everything else will change. तो बाकी सब कुछ भी बदल जाएगा. Thank you. God is love. Our God is love. God is love. Our God is love. God is love. God is love. Our God is love. God is love. Our God is love. God is love. वेलकम बैक. जो आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और ब्रेक पर जाने से पहले आपने ज़बरदस्त गवाही सुनी जेसिका की कि कैसे खुदा ने जेसिका की ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त जलाली काम किया है और आला तालीम इस बेटी ने हासिल की है, एक इंजीनियर है और एक बड़ी कंपनी के साथ ये काम भी कर रही हैं यूएसए में और अपने वालिदैन के साथ खिदमत भी कर रही हैं. सो जेसिका, आप किस मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं या किन एज ग्रुप्स में आप मिनिस्ट्री कर रही हैं? Right now, I'm doing in America, I'm helping with the children's Sunday school. फिल वक्त अमेरिका में मैं बच्चों का जो संडे स्कूल है उसमें खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ. My older sister Joy made a Genesis booklet for the children. और जो मेरी बड़ी बहन है जॉय, उन्होंने पैदाइश की किताब बच्चों के लिए एक मुरतब की है. It's word for word from the book of Genesis. वो पैदाइश की किताब ही लफ्ज़ पर लफ्ज़ है. And I'm teaching that to the children and explaining to them the meaning of the book of Genesis and the chapters that they read. और मैं छोटे बच्चों को पैदाइश की किताब पढ़ा रही हूँ, उसमें से बातें उन्हें समझा रही हूँ ताकि वो उसको समझ सकें. Praise the Lord, that's awesome. So Jessica, अब आप क्या मैसेज नौजवानों को बल्कि सबको देना चाहेंगी और क्या मैसेज आप देना चाहेंगी?
The message that I want to give जो पैगाम मैं देना चाहती हूँ is that after you receive your blessing, वो ये है कि अपनी बरकत हासिल कर लेने के बाद don't forget about God. खुदा को भूल ना जाइए, Because many times, क्योंकि बहुत मर्तबा once people receive their blessing or healing, जब लोग अपनी बरकत या शिफा हासिल कर लेते हैं before that, they spend a lot of time with God in prayer. तो उससे पहले तो वो बहुत सारा वक्त दुआ में गुजारते हैं, But afterwards, लेकिन इसके बाद they backslide and do the things that they used to do in the past. वो पुरानी जिंदगी में वापस चले जाते हैं और जो काम वो पहले करते थे वही दोबारा से करना शुरू कर देते हैं. And I believe that really hurts God. और मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि इससे खुदा के दिल को तकलीफ पहुँचती है, उसकी दिल आज़ारी होती है. Something similar happened with me. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. After I received my job, जब मुझे नौकरी मिल गई I started focusing on my job a lot. तो मैंने ज़्यादा तवज्जो अपनी नौकरी पर मरकूज़ कर ली. I didn't spend so much time in prayer or reading the Bible. मैंने दुआ में और बाइबल पढ़ने में कम वक्त सर्फ करना शुरू किया. But I felt different. लेकिन फिर मुझे कुछ बदला हुआ सा अपने अंदर महसूस हुआ. I felt empty because I wasn't spending time with God. मैं खालीपन महसूस करने लगी अपने बातिन में क्योंकि मैं खुदा के साथ वक्त नहीं गुजार रही थी. After I got my job, I praised God and thanked Him so much. जब मुझे नौकरी मिल गई तो मैंने खुदावंद की तारीफ की और उसकी बहुत शुक्रगुजारी की. But a short time after that, I stopped doing that. लेकिन उसके थोड़े ही अरसे के बाद मैंने ऐसा करना बंद कर दिया. When I started feeling empty, जब मैंने खालीपन अपने अंदर महसूस किया I realized I need to go back to God and continue my growth in my relationship with Him. तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे खुदावंद के साथ अपने रिश्ते में वापस मुंसलिक होने की ज़रूरत है और बढ़ने की ज़रूरत है. So I started to, every morning when after I started my work, हर सुबह अपने काम पर जाने से पहले I spent 20 to 30 minutes praying. मैं 20 मिनट से आधा घंटा दुआ में वक्त गुजारती हूँ. And now that I have to go drive to the office some days, और कई मर्तबा मुझे खुद ड्राइव करके अपने दफ्तर जाना होता है. I start praying in the car before I reach the office. तो मैं सारे रास्ते में जब ड्राइव कर रही होती हूँ तो मैं दुआ करती रहती हूँ. And I think that's helped me a lot. और इससे मुझे बड़ी मदद मिली है. And also in the morning I read the Bible before. और सुबह मैं बाइबल भी ज़रूर पढ़ती हूँ. And I'm glad because it's helping me to increase my relationship with God. और मुझे इसकी खुशी है इस बात की कि इससे खुदा के साथ मेरे रिश्ते में बढ़ोतरी आ रही है. Because we can't just be stuck in one place. क्योंकि हम एक जगह पर नहीं ठहर सकते, रुके नहीं रह सकते. We were meant to grow deeper in love and in passion and desire for God. Praise the क्योंकि हमें खुदा के साथ अपनी मोहब्बत में उस रिश्ते में मज़ीद गहरा होने की ज़रूरत है. And it reminds me of the children of Israel. और इससे मुझे बनी इसराइल याद आ जाते हैं. After God delivered them from Egypt जब खुदा ने उन्हें मुल्क मिस्र से रिहाई बख्शी and brought them to the promised land, और उन्हें वादे की सरजमीन में ले आया, God did so many miracles for them. तो खुदा ने उनके लिए बहुत से मोजज़ात किए. And in the beginning, they followed God and obeyed His commandments. और शुरू में तो वो खुदा की पैरवी करते रहे, उसके अहकाम मानते रहे. But afterwards, they started worshiping idols and they turned away from God. लेकिन इसके बाद वो खुदा से फिर गए और उन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी. And God was so sad because His people had rejected Him. और खुदा इससे बड़ा मलूल हुआ, उदास हुआ कि उसके अपने ही लोगों ने उसे रद्द कर दिया था. He yearned for His people to come back to Him. और ये उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसके लोग उसके पास वापस आ जाएं. But they didn't do that. लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया. And it's important for us to remember और ये हमारे लिए अज़हद ज़रूरी है कि हम याद रखें that once we receive blessing and miracles from God, कि जब हम खुदा से अपनी बरकतें और मोजज़ात हासिल कर लेते हैं don't turn back from God. तो खुदा की तरफ से अपना मुंह ना मोड़ें.
but continue and know God more and more. बल्कि खुदा को जानने में आगे बढ़ते चले जाएं, Because if you do, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे it'll change your life तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी and you'll receive even more blessing और आप मज़ीद बरकतों को हासिल कर लेंगे and peace and satisfaction that no one else can और give. आपके अंदर एक इत्मीनान और आसूदगी आ जाएगी. That's all. Praise the Lord. Amen. That is so awesome. अजीज़ों, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है और यही हमारा एक मेन मैसेज है बरकत टीवी पर कि जो सबसे बड़ी बरकत है वो ये कि हमारा रिश्ता हमारे खुदा के साथ उस जगह पर हो जहाँ वो चाहता है और वो है मोहब्बत वाली जगह जहाँ हम खुदा से अपने सारे दिल सारी जान सारी अक्ल और सारी ताकत से प्यार करते हैं यानी कि अपने सारे वजूद से सबसे बढ़कर खुदा से प्यार करते हैं अपनी बरकतों के लिए उससे प्यार नहीं करते अपनी बरकतों के लिए अपनी दुआओं के जवाब के लिए या अपनी किसी मौजज़े के लिए या किसी शिफा के लिए उसके पीछे नहीं जाते या इबादत नहीं करते या दुआ नहीं करते बल्कि दुआ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे प्यार है और इसलिए उससे प्यार है क्योंकि पहले उसने हमसे प्यार किया है हालेलुया और इसी सबब से उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में रूह के वसीला से आती है और पाक रूह की रहनुमाई में हम अपने उस रिश्ते में खुदा की कुर्बत में और उस गहराई में खुदा के हुजूर जब हम और आगे बढ़ते हैं तो जैसे बेटी जैसिका ने कहा कि खुदावंद फिर बरकतों पर बरकतें आपको देगा हालेलुया 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 तो जो बरकत टीवी का मोटो है ब्लेसिंग टू द नेशंस ये ब्लेसिंग बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह खुद है हमारा खुदा है जो सब के लिए एक सबसे बड़ी बरकत है ब्लेसिंग और इसलिए खुदा ने भी इब्राहिम को कहा कि मैं तेरा बड़ा अजर हूँ आई एम दाइन एक्सीडिंग ग्रेट रिवॉर्ड मैं तेरा बड़ा अजर हूँ और याद रखें वही हमारा सबसे बड़ा कीमती ख़जाना है इसलिए अजीज़ों हमने अपने रिश्ते को चाहे हम अच्छे हालात में से गुजरे हैं या बुरे हालात में से हमारे जो ज़मीनी ज़िंदगी में चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो ना सिर्फ उन प्रॉब्लम्स में हमने खुदा के हुज़ूर झुके रहना है बल्कि अपनी बरकतों में भी हमेशा खुदा की इबादत और परस्तिश करते रहना है प्रेज़ द लॉर्ड और यही एक सच्ची मसीही ज़िंदगी है यही वो एक सच्चा आशिक है और सच्चा परस्तार है जो खुदा से अपना दिल लगाए रखता है Praise the Lord. So thank you so much, Jessica. Your testimony was so powerful and the message that you gave to everyone it's incredible. Thank you for inviting me. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए जीजो हम दुआ करें आज अगर आप खुदा से दूर हैं और अपना दिल उसे देना चाहते हैं और अपना रिश्ता उसके साथ इस्तवार करना चाहते हैं तो उसे कहें कि खुदावंद तो मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर मैं अपना दिल और अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर से तुझे देता या देती हूँ और मसीह के नाम में जब आप ये दुआ करते हैं दिल से करते हैं दिल की संजीदगी से करते हैं तो खुदा अपने रूह को भेजता है और हमारी ज़िंदगी को अंदर से ट्रांसफॉर्म करता है और हमें अपना सच्चा परस्तार बना देता है प्रेज़ द लॉर्ड इस वक्त हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं आपकी जो भी कोई मुश्किल मुसीबत परेशानी है या बीमारी है या कोई मौजज़ा आप खुदा से चाहते हैं तो अपनी दरख्वास्तें खुदा उनके सामने रखें हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा आए हम दुआ करें हालेलुया हालेलुया खुदा बाप हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस दिन के लिए इन ज़बरदस्त बातों के लिए और जसिका और हदासा की गवाहियों के लिए तेरा शुक्र हो और वो मैसेज जो हमने जसिका के ज़रिए से सुना है खुदावंद इस मैसेज में हम कायम रहें और सदा तुझसे दिल लगाए रखें इस लम्हा जितने तेरे लोग तेरे हुजूर अपनी दुआएं अपनी गुजारिशात अपनी मनाजात पेश कर रहे हैं
تو ایک ایک کی درخواست کو سن, ایک ایک کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کر, ایک ایک کو اس کا معجزہ دے دے. جو شفا مانگ رہے ہیں ان کو شفا دے دے, جو اپنی دوسری ضروریات تیرے حضور رکھے ہوئے ہیں ان کی ایک ایک ضرورت کو اپنے پاک خزانے سے پورا کر. اسی لمحہ میں ہر طرح کی بیماری کو حکم دیتا ہوں, چاہے وہ کینسر ہے یا دل کی بیماریاں ہیں یا گینٹھیا ہے یا جلدی بیماریاں ہیں یا پیٹ کی بیماریاں ہیں یا پوشیدہ بیماریاں ہیں, جو بھی کوئی بیماری ان بدنوں میں ہے, بیماریوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں, چھوڑو ان بدنوں کو, چھوڑو ان زندگیوں کو یسوع کے نام میں. خداوند یسوع مسیح, میری محنت ہے کہ تیری شفا دینے والی قوت اور قدرت سر سے لے کر پاؤں تک گزر کرے اور ایک ایک بیمار بدن ہر طرح کی بیماری سے شفا پائے یسوع کے نام میں, یسوع مسیح ناصری کے نام میں. اگر کوئی ابلیسی ناپاک روحیں ہیں یا جادو ٹونے کے ذریعہ سے یہ لوگ ستائے جا رہے ہیں, تو یسوع کے نام میں میں ان ابلیسی ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہوں کہ چھوڑو ان زندگیوں کو, چھوڑو ان خاندانوں کو یسوع کے نام میں. اور ہر طرح کا جادو ٹونے اور بدروحوں کا اثر یسوع کے نام میں جاتا رہے. اور آج تیرے لوگ شفا پائیں, اور جو اولاد مانگ رہے ہیں ان کو اولاد کی برکت دے دے, جو اپنے بزنس میں اپنے روپے پیسے میں برکت مانگ رہے ہیں ان کو برکت دے دے یسوع مسیح کے نام میں. قرضے کی لعنت یسوع کے نام میں جاتی رہے, غربت یسوع کے نام میں جاتی رہے, جو اپنا گھر چاہتے ہیں ان کو اپنا گھر دے دے یسوع مسیح کے نام میں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. خدا پاک رو تیرا شکر ہو, تو لوگوں کو چھو رہا ہے اسی لمحہ. تھینک یو ہولی اسپرٹ, تھینک یو اسپرٹ آف دی لیونگ گاڈ. پاک رو تیرا شکر ہو, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. تیرا شکر ہو, تو نے ہماری دعاؤں کو سنا ہے, جواب دیا ہے, اور ان زندگیوں میں آج تو نے جلالی کام کیے ہیں. تیرا شکر ہو, تیرا شکر. اس طرح سے جو اپنے رشتوں میں پرابلمز فیس کر رہے ہیں, رشتوں میں جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں, یہ رشتے بحال ہو جائیں یسوع کے نام میں. خاص کر رشتہ ازدواج اور ماں باپ کا بچوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ریسٹور ہو تیرے کلام کے مطابق, تیری مرضی کے مطابق یسوع مسیح کے نام میں. آمین, 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 آمین. اور ہم سارا جلال خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کو دیتے ہیں. پریز the Lord, پریز the Lord. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. عزیزو, میرا ایمان ہے کہ خدا کے روح نے آپ کو چھوا ہے, کیونکہ دعا کے دوران میں نے پاک روح کے مسا کو فیل کیا ہے. ہاللیلویہ. اور میرا ایمان ہے کہ بہت سے لوگوں کو آج خدا نے چھوا ہے, اس لیے ضرور کال کریں اسکرین پر دیے گئے نمبرز کے ذریعہ سے, اور ہم سے رابطہ کریں, اپنی گواہی کو شیئر کریں, یا اگر آپ مزید دعا کروانا چاہتے ہیں, ہمارے پریئر وارریئرز آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہیں, ضرور کال کریں. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اور اس وقت آج ہم اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے جیسیکا کا. Thank you so much, Jessica, for coming and sharing your testimony and the message that God has put on your heart. Thank you so much. Pastor Mazam, آپ کے بھی شکر گزار ہیں آپ کی ساری خدمت کے لیے. Pastor Sajid, thank you so much. اور Hadassah, thank you so much for joining us today here on God is Love. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. اور الیانا, آپ کے بھی شکر گزار ہیں. Thank you so much for joining us. عزیزو, آپ جتنے برکت ٹی وی کے پارٹنرز ہیں اور کنگڈم پارٹنرز ہیں, نہ صرف اپنی دعاؤں بلکہ اپنے ہدیہ جات کے ساتھ, برکت ٹی وی کے ساتھ آپ پورے طور سے اپنی سپورٹ بھیجتے ہیں اور بڑے سپورٹیو ہیں. تھینک یو سو مچ. اسی طرح سے آپ برکت ٹی وی کے لیے دعا کرتے رہیں, ہمارے لیے دعا کرتے رہیں, اور اپنے ہدیہ جات بھیجتے رہیں. اور جو ابھی تک برکت ٹی وی کے پارٹنرز نہیں بنے, ضرور کال کریں اور برکت ٹی وی کے کنگڈم پارٹنر بنیں. تھینک یو سو مچ. تو عزیزو, کل ملیں گے ایک اور زبردست پروگرام کے ساتھ. دیکھتے رہیں برکت ٹی وی, دیکھتے رہیں گاڈ از لو. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل.